last class, we discussed dot product or scalar product of two vectors, and we discussed few properties of the scalar product of vectors. Now today we will solve few questions. The first question is, find the magnitude of vector A and magnitude of vector B if vector A plus vector B dot vector A minus vector B equals 8 and magnitude of vector A is equal to 8 times magnitude of vector B. Yes, we are given this. In the last class we learned that dot product is distributive. So first I'll open this bracket, that is dot product of this with this and this, then dot product of vector B with this. So I'll get vector A dot vector A minus vector A dot vector B, then plus vector B dot vector A minus vector B dot vector B equals 8. Right? Yes, we learned that dot product is commutative. Right? Commutative means vector A dot vector B will be same as B dot vector A. So I'll get vector A dot vector A minus A dot B. I can write this as vector A dot vector B minus vector B dot vector B. This equals 8. Right? Now, this will get cancelled out. So I'll get vector A dot vector A minus vector B dot vector B equals 8. In the last class, we also learned that vector A dot vector A is equal to square of magnitude of vector A. So using this result, I'll get this will become square of magnitude of A and this will become square of magnitude of B. Right? Now we have to find the magnitude of vector A and magnitude of vector B. So now I'll use this fact. So according to the question, magnitude of vector A is equal to 8 times magnitude of vector B. So I'll use this here. So I'll get 8 times magnitude of vector B and this square minus magnitude of vector B square. So this will be 64 into square of magnitude of vector B minus this. That is, so this implies 8 over 63. So this implies magnitude of vector B will be square root of 8 over 63. Positive square root liya hai because magnitude of a vector cannot be negative. So on simplification, I'll get magnitude of vector B is equal to 2 root 2 over 3 root 7. Right? Which is 2 by 3 into square root of 2 by 7. This is the magnitude of vector B. Now magnitude of vector A, yes, it is 8 times magnitude of vector B. So I'll get 8 into 2 by 3 into square root of 2 by 7. So I'll get 16 by 3 into this. This is the magnitude of vector A. Find magnitude of vector X if for a unit vector A, vector X minus vector A dot vector X plus vector A equals 12. Right? Question is similar to the previous one. Right? Now, for a unit vector A, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A इज अ यूनिट वेक्टर, इसे इंटरप्रेट करोगे तो इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 1 यूनिट. राइट? यही मतलब है यूनिट वेक्टर का. नाउ वी आर गिवन दिस, तो जैसे पहले किया था, आई ओपन दिस ब्रैकेट, सो आई गेट
vector x dot vector x plus vector x dot vector a. Now this with this minus vector a dot x minus vector a dot vector a equals 12. Right? Now again vector x dot vector a is same as vector a dot vector x because scalar product is commutative. So this will get cancelled out. So I'll get vector x dot vector x minus vector a dot vector a is 12. Now this is equals to square of magnitude of vector x and this is equals to square of magnitude of vector a. Yes. Now what is magnitude of vector a? It's 1 because it is a unit vector. So this implies this. So from here magnitude of vector x squared will be equal to 13. So this implies this is equals to root 13. So magnitude of vector x is square root of 13. Next question is, if vector a is 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, vector b is minus I cap plus 2j cap plus k cap, vector c is 3i cap plus j cap. These vectors are such that vector a plus lambda times vector b, here lambda is a scalar, is perpendicular to the vector c. ये वेक्टर इस वेक्टर c के परपेंडिकुलर है. We are to find the value of lambda. Yes. Vector a plus lambda times vector b is perpendicular to vector c. ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. राइट? तो इसका मतलब वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज 0. तो हम इस पर वर्क करेंगे और यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. राइट? तो अब सबसे पहले हमें ये वेक्टर फाइंड आउट करना है. वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b इज इक्वल टू दिस इज वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स दिस इज वेक्टर b. अब यहाँ पर इस वेक्टर को हम इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस वेक्टर का हर कंपोनेंट लेमडा से मल्टीप्लाई होगा. सो आई गेट माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप. राइट? अब हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है. राइट? सो आई गेट 2 माइनस लेमडा आई कैप then 2 plus 2 lambda j cap and 3 plus lambda k cap. So this is the vector a plus lambda times vector b. Now vector a plus lambda times vector b is perpendicular to vector c. So this implies their dot product will be 0. Right? Yes. अब ये है वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b और ये है वेक्टर c. दोनों वेक्टर्स अपनी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है. हाउ टू गेट देयर डॉट प्रोडक्ट? यस. a1 b1 दैट इज 2 माइनस लेमडा इंटू 3. राइट? प्लस 2 plus 2 lambda into 1 plus 3 plus lambda into यहाँ पर it will be 0 because I can write this as plus 0 k cap. Right? So this dot product is equal to 0. Now we will simplify this and we will get the value of lambda. So it's 6 minus 3 lambda 2 plus 2 lambda equals 0. So from here minus lambda plus 8 equals 0
and this implies lambda equals 8. So value of lambda is 8. Next question is, if vector A, vector B, vector C are unit vectors. अब unit vectors हैं तो it should be clear their magnitude is 1 unit. Such that vector A plus vector B plus vector C is equal to null vector. Right? Now the question is, find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. This we need to find. Right? Yes. Question के according vector A plus vector B plus vector C is a null vector. So do you agree? Vector A plus vector B plus vector C dot vector A plus vector B plus vector C will be 0. अगर दो वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर एक नल वेक्टर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. राइट? अब जैसे पहले किया था, वी विल ओपन द ब्रैकेट, पहले वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, और फिर वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ. सो आई गेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, देन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, देन वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, vector C dot vector B and vector C dot vector C. This equals 0. Now, this will be equal to magnitude of vector A squared. This is vector A dot vector B. This is same vector A dot vector C. This is same, and this will be equal to square of magnitude of vector B, and similarly this will be equal to square of magnitude of vector C. Right? Now, what is the magnitude of vector A? It's 1. Now, according to the question, magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B equals magnitude of vector C equals 1 unit, because they all are unit vectors. So, here I'll get 1. In place of this, I'll get 1. In place of this, I'll get 1. राइट? अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो यहाँ पर B डॉट A की जगह पर कैन आई राइट A डॉट B? राइट? सिमिलरली C डॉट A की जगह आई कैन राइट A डॉट C, और C डॉट B की जगह आई कैन राइट B डॉट C. सो आई गेट दिस. So I'll get 1 plus 1 plus 1. I'll get 3. Vector A dot B plus vector A dot B. I'll get twice of vector A dot vector B. Similarly, this plus this will give you twice of this, and this with this. Twice of vector A dot vector C is 0. So from here, twice of this vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus, yes, I can write vector C dot vector A equals -3. So from here, this value will be equal to -3/2. Right? Next question is, if vertices A, B and C of triangle ABC are, yes, A has coordinates 1, 2, 3, B has coordinates -1, 0, 0, and C has coordinates 0, 1, 2. Then find angle ABC. Right? Yes. Let's draw the rough diagram. Let this be A with coordinates 1, 2, 3. This be the point B with coordinates -1, 0, 0. And C has the coordinates 0, 1, 2. Right? Now I want to find the angle ABC. ABC. That is, I want this angle. Right? So, let angle ABC be denoted with theta. तो हमें ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है. यस. अब ये जो एंगल थीटा है,
It is between the vector BA and vector BC, right? तो अब हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है. हमें पता है दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज गिवन बाय this. So from here theta will be cos inverse of this. So थीटा निकालने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें वो वेक्टर्स पता हों, राइट? तो थीटा इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर बी ए. सो सबसे पहले हम ये वेक्टर्स निकालेंगे. यस, वेक्टर बी सी विल बी इक्वल टू, यस, this is the terminal point and this is the initial point. So head minus tail, that is 0 minus minus 1 I cap, then plus 1 minus 0 j cap, then 2 minus 0 k cap. So from here vector BC will be I cap plus j cap plus 2k cap, right? Similarly, vector BA will be equal to, yes, terminal point is A and initial point is B. So terminal point minus initial point. So 1 minus minus 1. So 1 minus minus 1 I cap, then 2 minus 0 j cap, then 3 minus 0 k cap. So vector BA will be equal to, this is 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. This is the vector BA. Now cos theta, where theta is the angle between vector BC and BA, will be given by vector BC dot vector BA divided by magnitude of vector BC into magnitude of vector BA, right? तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. सो इट विल बी, यस, 1 into 2 plus 1 into 2 plus 2 into 3. So I'll get 2 plus 2 plus 6, that is 10. So vector BC dot vector BA is equal to 10. Next I'll find out magnitude of vector BC. Yes, this is vector BC. So its magnitude will be square root of 1 plus square of 1 plus square of 2. So I'll get square root of 1 plus 1 plus 4, that is root 6. So magnitude of vector BC is root 6. Similarly, magnitude of vector BA will be, this is vector BA, so it will be square root of 2 plus square of 2 plus square of 3. So I'll get square root of 4 plus 4 plus 9, that is square root of 17. So therefore cos theta will be equal to, now substitute the values here, vector BC dot vector A, it was 10 divided by magnitude of BC, which is root 6, magnitude of vector BA, which is root 17. So this is 10 over square root of this, right? So from here theta will be cos inverse of this. Next question is, if either vector A is null vector or vector B is a null vector,
देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 0, राइट। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर है तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. नाउ इज सेइंग कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो ये इम्प्लाई नहीं करता कि दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर होगा. जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. यानी कि हमें ऐसे दो वेक्टर्स ढूंढने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो लेकिन दोनों में से कोई भी वेक्टर नल वेक्टर ना हो, राइट. यस, if I take vector A to be I cap and vector B to be j cap, then vector A dot vector B will be I cap dot j cap, and this we know is 0, right, because I cap and j cap are perpendicular vectors. But vector A is not equal to null vector, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है 1 यूनिट, राइट. तो ये नल वेक्टर नहीं हो सकता. एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल वेक्टर बिकॉज वेक्टर बी कौन है जे कैप, और जे कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 यूनिट, राइट. तो यहाँ पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो 0 है लेकिन दोनों में से कोई भी वेक्टर नल वेक्टर नहीं है.